अनुपम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol। अभी क्या करना है? अभी 7 बज रहे हैं, 7 o'clock। प्रवचन करेंगे महाराज। हाँ, कथा सुनाइए महाराज, लगा सुनाइए। और एक कीर्तन सदा कर लेता हूँ, ठीक है। 5-10 मिनट। इसके बाद ठाकुर जी का वो कर दीजिए। ठाकुर जी का वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अभी कितना तो टाइम लगा प्राण प्रतिष्ठा में करने में? नहीं, वो तो 2 मिनट का समय है, उससे कोई बात नहीं। अभी तो अभिषेक हो गया, इसके बाद है वो स्पेशल मंत्र होता है, अच्छा अच्छा जी। प्राण आह्वान का मंत्र होता है। ठीक है महाराज। हैं? गाते थे ना हैं? आप, एक बहुत अच्छा भजन गाते थे ना, नौनी नहीं खिले पे कहाँ से लाऊं। ओ अच्छा, देखो देखो आसी वो गाइए महाराज। वो कीर्तन करना। अरे वो तो सुबह का कीर्तन है। सुबह का है? और सवेरे सवेरे उठ के मौल आया ना, हाँ। हम लोग कोई बात नहीं। देखो देखो आसी जतन देवासी हमार गौरांग चाली प्रभाती उठिया अंचल धरिया ननी दिमावली काम। प्रभाती है ना, प्रभात मैंने प्रातः काल मॉर्निंग, वो काल सुनाएंगे। अभी रात्रि हो गया, अभी एक थोड़ा कीर्तन कर लो तुम। कृष्ण देव भगवंतं वंदे कृष्ण देव भगवंतं वंदे कृष्ण देव भगवंतं वंदे Krishna Deva Bhagavatam Vande Krishna Deva Bhagavatam Vande Napi Samadhishu Vidirapi Pashyati Natavonaka Gramariche अद्भुत Vichami Vishwanyata Achyuta Tadapi Adbhuta Viche Krishna Deva Bhagavatam Vande Oh Krishna Deva Bhagavatam Vande
गंधर्विका गिरधारी श्री श्री राधा बिहारी जी की जय बिना मदन मोहन जी की जय जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद स्तोत्र भक्ति वेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद स्तोत्र भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय लाभ विष्णुपाद भक्ति भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय गोविंद गोस्वामी महाराज भक्ति रक्त सिद्धर गोस्वामी महाराज की जय महाराज की जय रूपानुग गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय पावन नित्यानंद प्रभु संत गुरु वैष्णववृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि थोड़ा हरि कथा करके अभी ठाकुर प्राण प्रतिष्ठा offering hope then our sequence. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurmitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Vancha Kalpataruvasya Kripa Sindhu Vaivacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebho Namo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanam Gauratise Namo He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Kanta Radhakanta Namastute Taptakan Sujana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Keshava Krishna Bhakti Prade Devi Satyavakti Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful obeisance, Dandavat Pranam, to the feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Sapati Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Sapati Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam, Lotus Vigar Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Srimad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, and all senior devotees and all the Vaishnavas. कौन सा है? सिंपल कथा सुनाता हूँ। जैसे क्या कथा सुनाता हूँ? ठीक है, जो आपकी इच्छा है महाराज, जो आपकी इच्छा है. Actually, few days I also talk about Brihad Bhagavatamritam Sanatana Goswami Pad. Very simple, I explain what is the essence of Srimad Bhagavatam. Because Srimad Bhagavat very complicated grammar, not so easy to understand. Sanskrit word and also many tattva, siddhanta, philosophy are there inside. Not so easy to understand. So for this regard, Sanatana Goswami Pad, very simple way, he also discussed Srimad Bhagavatam, essence of Srimad Bhagavatam. There are two stories in there. One is the story of Narad Rishi, or another story that is called
Gopakumar. आज महाराज गोप कुमार का बताइए. The story of Gopakumar very simple and very sweet because the mood of Brajavasi, Braj mood is inside there. Just I tell to you, Sanatana Goswami Pad told there was one Brahmana who was born in Mathura. But in his Brahmanical duties, activities, he can't to maintain his life. Because in Kali Yuga, very difficult to get donation from the people. India, maybe 1 rupee 50 paisa they will give to Brahman. Now giving 100 rupiah, the people will maybe 1 rupee. सवा रुपया. 1 rupiah, 1 rupiah 25 paisa. हाँ. 100 rupiah. Anyhow, so for this regard, the Brahmana, he left Mathura and he went Assam. That is called Sanskrit word Assam. His full name was Prak Jyotishpur. What did he say? Prak Jyotishpur. And he started some business. Just he had some little money capital. He also invested his money on small business. And everything depends on faith. And भाग में जो कुछ होता है तो वही होता है. किया अभिमान जब ये माने नहीं पाएगा होगा प्यारी वही जैसी पाएगा. Everything depends on Krishna. राम जी की जो इच्छा है. So now coming in this way, he started that business, but his business completely what? He's a Brahman, how he can get a business? He was not a businessman. He was a Brahmana. But anyhow, his business failed. Even he could not maintain his life also. No water, no food, stuff, nothing here and there. One day he was running here and there, and once at night time he also took rest in the temple of Devi Durga. Actual in Assam, that Devi Devi is called Kamakya Devi. So when he was sleeping in the temple of Devi Kamakya, goddess Kamakya, then Devi, she had come in his dream. And Devi told, hey Brahmana, Mathur Brahman, listen, I am giving you very valuable things to you. Your life will be successful. Then Devi Kamakya also gave him Gopal Mantra. Now you are chanting Gopal Mantra. How many syllables in Gopal Mantra? कितना अक्षर गोपाल मंत्र में? 18 गोपाल मंत्र. 18 अक्षरम कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र बने 18 syllables in our Gopal mantra. But before same Gopal mantra, that time Acharya they also gave only 6 syllables are there. They call Sadakshar Gopal mantra. Sada Akshara Sadakshar Gopal mantra. Very simple, small. In dream, she told, hey Mathur Brahman, you chant this mantra, Gopal mantra, then your life will be successful. Then the Brahman picked up and he chanted this Gopal mantra after taking bath. Then he left that place and he came Ganga Sagar. In Bengal, where the Ganges meet with the ocean. That is called Ganga Sagar. Or Bengali version is Sabtirtha Bar Bar, Ganga Tir, Ganga Sagar. You can go all the holy places, holy rivers can take bath 1,000 times, 1 time, 2 times. But you have to take bath in Ganges. Ganges how many? Only one. And I don't know. So anyhow, that Mathura Brahmana, he took bath in Ganga Sagar. Then he left that place. He came Bihar, and in one river, there is a Karmanasa river, remember. What the river? Karmanasa river, nearby Baskar. Where they were born? आरा एंड बक्सर के बीच बीच उधर ही होता है. बक्सर गामा के बीच में.
चलो हो गया अच्छा चलो तो नदी and that river is named called Karmanasa. Karmanasa means if you take bath in that the river, all your karma destroy. Listen, for this regard, that river name is called Karmanasa. Then he left that place and then he came in Benares. And he took bath in Benares, Kashi, Benares, and in there also Gangaji is there, Manikarnika Ghat. If you go Benares, very nice, beautiful place there. And Manikarnika Ghat means one specific steps. And on the safe also Lord Shiva is there. Mahadev is there. Shiv Parvati Mandir is there. Very nice, beautiful temple in there. So after taking bath in the Ganges, Manikarnika, then he also worshipped Lord Shiva. Because our Shastra is saying, without the mercy of Lord Shiva, very difficult to attain Suddha Bhakti also. Vaishnavanang jatha Sambhu, Nimnanang jatha Ganga. Our Shastra explains, there are many Vaishnavas, but Lord Shiva is the topmost Shiva. And topmost Vaishnava. Vaishnavanang jatha Sambhu. There are many holy rivers, but Nimnanang jatha Ganga. And according to Hindu Dharma, Hindu religion, they believe two things, and then Ganga and Lord Shiva. So that time, Lord Shiva also told to him, hey Mathur Brahmana, don't stay here. Because in Benares, Kashi, most of the impartialists, they are staying here. Only they are chanting, Aham Brahmasmi, I am Brahma, Brahma. You are not Brahma. But they are chanting, I am Brahma, I am Brahma. So he should leave this place. But Lord Shiva, he is very kind, generous. He delivered all the living entities and chanting the Ram Nam. Actually, Lord Shiva, he chants Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. There are so many glories about Benares or Kashi. If you left your body in Kashi, then you will automatically get the liberation, mukti. Just I take one very small story. There was one very stupid nonsense king. That is called Mahapapi. Mahapapi, understand? Great sinner, king. But he heard about the glories of Kashi. They are thinking, oh, in my life I committed many sinful acts. So I have to give up my body in Kashi. Then I will free from all kinds of sinful activities, and after my death I will get mukti, liberation. But then he thinking, what will do? Maybe my mind will be disturbed, I will not give up my body. For this regard, king told his person, you cut my hand and legs, and anyhow put in Kashi. Then king's person cut his hand and leg and put in Kashi. Because thinking my rest of life I have to Stay in Kashi. give up my body in Kashi. Then I automatically get the liberation, mukti. So in this way he was staying in Kashi, his hands and legs cut. Then Lord Shiva and Parvati gave this sinner people, Mahapapi. So how possible I give him liberation here? Had to kick out from my this Kashi. You read Kashi Mahatma, the glories of Benares. Very nice, beautiful story. Then one day, Shivji, he manifested one form of very nice, beautiful horse, black horse. And Devi Parvati, she manifested in the form of horse, Ghodeswar, what is it called? Horse rider. So came in that place. King, he was Kshatriya. So horse rider, then Devi Parvati, she glorified about her horse. Look, my horse is very beautiful. But this horse is running very faster. Not so easy to sit, ride on the back of the horse. And control.
king is Kshatriya, and if you speak to the glories of the horse and the ride, this thing, then king cannot tolerate. King says, no, I can do this thing. That time horse rider, then the Sevi Parvati said, how possible? Well, yes, I can control. Just you put me on the back of the horse, though my no hand, but I can control. Just I control this. Devi Parvati told, okay, I put on the back of the horse. Then that king, he also sitting on the back of the horse. The horse was running, and past the Kasi border. Then he fell down, king fell down, and left his body. Understand? The king did not give up his body in Kasi, not possible. But in Kasi, Mahatma also explained this way: Lord Shiva and Parvati, not easy, give also mukti to you. So, but Lord Shiva told to Mathur Brahman, you don't stay here. Here many Mayavadis, impartialists, just they are chanting Aham Brahmasmi, Aham Brahma, Brahma, don't stay here. You go to and Prayag, understand? At that Allahabad, had the three rivers meeting together, Ganga, Jamuna, and Saraswati. So Mathur Brahmana, he came in Allahabad, Prayag. Triveni, that is called Triveni Sangam. Three rivers meeting together. And then he took bath. Also they are very nice, beautiful deities on there. That is called Bindu Madhav. If you go Prayag, Triveni, that very nice, beautiful deity, Bindu Madhav, Thakurji. Sankha Chakra Gada Padmu, Bindu Madhav is there. Then Bindu Madhav told, hey Mathur Brahman, you are very lucky. You left Kashi and Shivji gave you blessing to you. So now you have to go Mathura, then you have to go Vrindavan, then your life will Then the Mathura Brahmana, he left Prayag, then he came in Mathura and he took Ajman in Visram Ghat. Because our scriptures explain, without this mercy of Mathura Devi means the presiding deity of Mathura. Without her mercy, no one can enter in Vrindavan. Now people are thinking, I will go Vrindavan, but key is and the key of Vrindavan in the hand of Mathura Devi. If you want to go Vrindavan, you must take darshan to Mathura Devi. Mathura Devi, understand? Mathura Devi darshan করেছেন কখন? করেন না? বিশ্রামঘাট দেখি মথুরা দেবী আমাদের কেশবজি গৌড়ীয় মঠ রয়েছে ওই হোলিগেট থেকে একটু বাইরে বেশি নয় 100 মিটার নট ভিতর দিকে গেলে ওখানে মথুরা দেবীর মন্দির রয়েছে হ্যাঁ ওই মথুরা দেবী হ্যাঁ সব যা আমাদের পরিক্রমা সময় গুরুদেবও যেতেন বাবা হ্যাঁ तो पहले वहीं जाते हैं उस विश्राम घाट आचमन लेते हैं हाँ विश्राम घाट में हम लोग आचमन भी टेकिंग द आचमन विश्राम घाट क्यों जब परिक्रमा होता है तो उसमें मंदिर में हम जाते हैं हाँ जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम जरूर हाँ जरूर जाएंगे आप किसी को पूछो आपको जाना ही चाहिए जब तक मथुरा देवी की कृपा नहीं हो आप भले ही वो पैसा खर्च करके टैक्सी भाड़ा करके या वृंदावन चले जाए किंतु वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका शी नॉट एक्सेप्टेबल because without Mathura Devi but हम लोग आज पहली बार सुन रहे हैं हाँ इसमें है ना मथुरा महात्म्य वर्णन लिखा है महाराज इतने दिन से हम लोग मिल रहे हैं अरे इतने दिन से तो है पहली बार सुन रहे हैं हाँ ये मथुरा महात्म्य कथा है ब्रह्मंड परिक्रमा ग्रंथ में लिखा है मथुरा महात्म्य मथुरा देवी की कथा है गुरुदेव तो हर्ष में जाते हैं गुरुदेव के साथ जाते हैं इस बार हम लोग दुर्वासा जी का आश्रम देखे हाँ बहुत अच्छा so now coming in this way so Mathur Brahmana he took Ajman Visram Ghat and prayed to lotus feet of Mathura Devi with the presiding deities of Mathura
and took permission from her. Then he proceeded to Vrindavan. Gopkumar when came in Vrindavan on the bank of Jamuna and Kesi Ghat. Hare Krishna, he killed Kesi demon. That's called Kesi Ghat. And इसका नाम पहले गोपकुमार से मातृ ब्राह्मण था क्या नाम? नहीं मातृ ब्राह्मण तो अलग आदमी है। मातृ ब्राह्मण जो ब्राह्मण जो बिजनेस करने के लिए गए थे, आप भूल गए सब? नहीं गोपकुमार कहाँ से मातृ गोपकुमार ब्राह्मण? अभी बताएंगे, गोपकुमार की कथा आपको बताएंगे। अच्छा, अभी सुनो कथा को। अभी तो गोपकुमार के नाम ही नहीं लिया आपके पास। अभी लिया था आपने? इंट्रोडक्शन में ले लिया। चलो। Now Mathur Brahman, he arrived in Vrindavan and on the bank of Jamuna and Kesi Ghat. Then Mathur Brahman, he saw one very nice young person. Not look like 15 years old, but maybe his age is very, maybe aged, but look like 15 years old. Very nice, beautiful, Ajay Chatusam. His body is this way. And he completely absorbed in a trance. Dhanastha closed his eyes and also chanting sweet holy names. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishore Krishna Hasi Yasoda Tanaya Prasida Sri Vallabhi Vanaladi Kesha Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishore Krishna Hasi Yasoda Tanaya Prasida Sri Vallabhi Vanaladi Kesha that person completely absorbed with ecstatic mood chanting this holy name. Tears rolling down, and all his tears standing in, romancha kampa, and shedding tears, and completely calm and then Madhu Brahmana, he sitting in front of him. And, oh, what kinds of sadhu, very high class, exalted sadhu. যাহারে দেখিলে আইসি কৃষ্ণ নাম তাহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান, which Uttam Bhagavad, just taking darshan, their heart melted, tears rolling down, and automatic holy names manifested on your tongue, which is called Uttam Bhagavatam. Chaitanya Charitamrita which is called Uttam Bhagavad, যাহারে দেখিলে আইসি কৃষ্ণ নাম তাহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান. Just there Mathur Brahman sitting in front of him and listening sweet and holy name, sweet melodies coming from his lotus mouth, and tears rolling down. In this way, few minutes they are sitting. Then after few minutes, that person, he opened his eyes and very sweet smile also, very nice, beautiful sidelong glance towards him, and so much love and affection, and told, hey Mathur Brahmana, you born in Mathura, then you went Pragjyotispur Assam, then you received this mantra, Gopal mantra, and from the goddess of Kamakhya Devi Durga in your dream. Then you have come in this place, Ganga Sagar, Ganga to Karmanasa, Bihar, then you Benaras, then this, everything.
And when told this thing, then Mathur Brahman become very surprised and choked. How possible? How did he know? I got this mantra, Gopal mantra, in my dream. I did not tell to anyone. But how did you know about my this very confidential mantra? Then Gopkumar just smiled, told, hey Mathur Brahman, don't worry. I know everything. And there's so much faith coming with him. So much faith coming. Yes. He's exalted sadhu. And so much love and affection this way. Then told, hey Mathur Brahman, actually so many years I am here waiting for you. We are searching Guru, but Guru is searching for you. Who is searching to Guru? Disciple cannot search Guru because disciple is what? Blind. 5% blind person to search to Guru. Guru is searching the perfect disciple. This is that's another Goswami Pada explained it very nice. Then Gopkumar told him, Mathur Brahmana, don't worry. Listen my life history, how I attain my highest perfection goal. I tell you. Then your faith will come. Sometimes Guru, he explained his own realization in front of his disciples. Srimad Bhagavatam gives evidence. Siddhasya Sisasya me, Srimad Bhagavatam first canto, very clearly explained this way. Sutta Goswami Pad told, He Sonukadi Rishi Munis, listen. Guru, bona fide Guru, he speaks everything in front of his bona fide disciple. Not every disciple, not stupid nonsense or duplicity, hypocrisy disciple. Siddhasya Sisasya. You can read Srimad Bhagavad Gita. Siddha Sisya. Siddha Sisya means that disciple heart should be neither no duplicity, no hypocrisy. You have to open your heart in front of your Guru. Gurudev, I completely want effective with calm, krodha, last anger. Gopinath, mamani vedam suna, ami visayi tujana, sadata marata, kichu nahi mora guna. Gopinath, mamani vedam suna. Bhaktivinoda Thakur, very humble, sang this song. Hey Gopinath, listen my prayer. Mama Nivedana, listen my prayer. I completely heard. Dedicated with kama, krodha, lust and anger. I can't control my lust and anger. Hey Gopinath, you purify my heart. You deliver Jagai Madhai. You deliver many asura. And you give shelter unto lotus feet all the asura. Asura sakala paila charana vinodha rohilo pori. Ar asura sakala paila charana vinodha rohilo pori. Bhaktivinoda Thakur sang this song. And hey Gopinath, you deliver all the demons. Bhagasura, Bakasura, Putana. But I am still in here. Please deliver me. Please give me shelter to lotus feet. Hori din to galo sande halo par karawa mare. Tumi parir korta suni barta tai to tire bose. Hori din to galo sande halo par karawa mare. Very nice, beautiful this song also. Maybe one day I will explain the meaning of the song. Janan is a Bangla song, बहुत सुंदर. Hori din to galo sande halo par korawa mari. नदी किनारे दिन हो गया, शाम हो गए, अब तो पार कराओ. हाँ, ये सिंपल करो. हरी दिन तो गलो सुन. मैं हमारे जीवन रूपी दिन चला गया.
शाम हो गया माने बुढ़ापा आ गया। शाम क्या है? बुढ़ापा आ गया। सही बात है My life has gone. হরিদিনটা গেল সন্ধে হলো পার করাওয়া মারে তুমি পারের কর্তা। I heard only you are the one person to deliver all the living entities from the ocean of Maya. তুমি পারের কর্তা শুনি বার্তা তাই তো তীরে বসে। For this regard I have come here and sitting on the bank of the river. Take these words. Very nice song this. তুমি পারের কর্তা শুনি বার্তা তাই তো তীরে বসে। যারা আগে যারা পিছে এলো আগে গেল আমি রইলাম বসে। আমি আগে এসে রইলাম বসে পার হইবার আসে। Here in this Bengali song explain, hey Hari, hey Bhagavan, hey Krishna, I am sitting here on the bank of the river, and you are boatman. You also crossing to everybody and in this river. Those who have come after me, you deliver to them. You cross the river, but still I am sitting here. যারা পিছে এলো আগে গেল। एक बार आप समझाए ना, उसके फिर बंगला समझ आ रहा है, उसके पहले नहीं समझ आ रहा था। हाँ बताइए। आगे कार्य गेलो। আমি আমি আগে এসে রইলাম বসে পার কইবার আসে। मैंने पहली आकर के बैठा है किंतु मैं बैठा रहा। যারা পিছে এলো আগে গেল আমি রইলাম বসে। माने जो लोग पीछे आया था उसको लोग आप तो उनको आगे पैर कर दिया। मैं उधर बैठा हूँ। शाम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसको कीर्तन जी बोले ना आपके हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। हाँ जी, गोपीनाथ मन निवेदन सुना इसी के तरह। नहीं, ये तो दूसरी कोई भजन कीर्तन है। ये तो ये भक्तों का कीर्तन नहीं है। ये कोई और किसी का है। ये कोई लालन फकीर नाम से कोई एक भक्त है, उन्होंने लिखा। बहुत सुंदर कीर्तन है। आनंद आप इसकी व्याख्या कर दोगे हिंदी में, आपके इतने आनंद आएगा, आपके हृदय इतने द्रवीभूत होगा, बड़े उसके बार बार सुनते रहे, बार बार सुनते। शुरू किससे होता है महाराज? सॉरी। হরি দিন তো গেল সন্ধে হলো পার করাও আমারে। হরি দিন তো গেল সন্ধে হলো পার করাও আমারে। তুমি পারের কর্তা শুনি বার্তা তাই তো তীরে বসে। হরি দিন তো গেল সন্ধে হলো পার করাও আমারে। আগে এসে রইলাম বসে পার হইবার আসে। হরি দিন তো গেল সন্ধে হলো পার করাও আমারে। যারা পিছে এলো আগে গেল আমি রইলাম বসে। যারা পিছে এলো আগে গেল আমি রইলাম বসে। হরি দিন তো গেল সন্ধে হলো পার করাও আমারে। আর পারের করি নাই কো ঠাকুর পার করাও আমারে। পারের করি নাই को ठाकुर, क्या बोल रहे हैं? ये ठाकुर, ये भगवान जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विचार है, दान पुण्य किया, उनको तो आप पार कर लेते हो। मैं जीवन में भी दान पुण्य तक नहीं किया, अच्छे कर्मों तक नहीं किया। हम संसार के पार तो यही तक है, दानो बतो तपो होम श्रद्धा। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में संग भगवान कृष्ण उद्धव की भी कार्य इस संसार से पार होने के लिए अनेक प्रकार जो है उपाय बताए। देयर आर मेनी प्रोसेस हाउ टू डिलीवर फ्रॉम द ओशन ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस। दान बहुत तपो होम श्रद्धाय, दान डोनेशन देते हैं, तपो तपस्या आदि करते हैं, होम आदि हवन आदि करते हैं, पूजा श्रद्धा आदि करते हैं, वेद अध्ययन आदि करते हैं। उससे लोग पार हो जाए, संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाए। हम तो कुछ नहीं किया, वो करे। যারে পাড়ির করি নাইক ঠাকুর পার করাও আমারে। হরি দিন তো গেল সন্ধে হলো পার করাও আমারে। যাদের যাদের করি নাইক প্রভু পার করাও
विहारे। बोले जिसके कोई कोड़ी नहीं है, माने पैसा दान तपस्या, उसको आप कब करते हो? संध्या काले। नेरो स्वभाव आमी जानी भालो मते, कोड़ी ना पाइले पार करे संध्या काले। ने माने ने शब्द क्या है? माने नाव वाले जो होता है, नाविक माने बोटमैन। बोटमैन क्या करता है? इधर से उधर सारा दिन जो लोग को पार पार करते हैं। जिसके पैसा नहीं है वो बैठा रहता है। जब शाम हो जाता है वो तो इस पार से उधर जाते हैं, मतलब मेरे नौका तो खाली जा रहे हैं, चलो इसको लेकर के चला जाता है। वृंदावन गया, इसलिए कह रहे हैं नेरो स्वभाव आमी जानी भालो मते, कोड़ी ना पाइले पार करे संध्या काले। दो व्यक्ति जीवों को जो है पार कराते हैं। एक होता है ग्वाला, ग्वाला जानते हो? दूध मिल्कमैन। और एक होता है ना बोटमैन। मैं आपके ग्वाला की बात बोलूं, आप शायद देखे होंगे ग्वाला पहले ना वो बेचता था, दही बेचता था। उनका एक भार होता है, पांच जिसको कहा जाता है। देखा ना आपने? आजकल तो कुछ नहीं है, तथापि आप देखोगे नवद्वीप में देखोगे दोनों तरफ जो है उसको जो है लटका करके रखता है। एक तरफ एक कुछ जो है 5 किलो दूध दही और इस तरफ जो है दूध को। अच्छा, जब माने एक साइड का दूध जो बेच जाता है तो वो क्या करता है? बैलेंस खराब हो रहा है। वो बैलेंस खराब हो जाए ना, दूसरी तरफ वो ईट के जो है अपने ऊपर करते हैं, उसको भी लेकर ही चलते हैं। दूध तो बेच गया है, एक तरफ दूध रह गया है, तो बैलेंस तो दोनों पर रखना पड़ेगा, नहीं तो लेकर के कैसे चलेगा? मानो वो एक तरफ 5 किलो, इस तरफ 5 किलो, उसको दूध 5 किलो चला गया, 5 किलो रह गया, तो उसको क्या करेगा? वो ईटा लगाता है, वो एक तरफ ईट लगाता है, नहीं तो चल नहीं पाएगी। तो उसी प्रकार कह रहे हैं नेरो स्वभाव आमी जानी भालो मते, कोड़ी ना पाइले पार करे संध्या काले। I know the nature of the boatman. If he would not get money, but he had to cross the person who has no money in the last moment of evening. बोलो वृंदावन बिहारी। तो इस कीर्तन में भी बाउल गीत है कि क्या है? बाउल गीत है क्या? बाउल गीत नहीं, ये तो हमारे रामायण की कथा, हमारे बांग्ला रामायण में लिखा है। नेरा सब रामचंद्र की नाम महिमा कह रहे हैं। हम इसको जब छोटे थे ना, हम लोग तो रामायण पढ़ते थे। हम जीवन में जो रामायण गीता पढ़ते थे, गीता रामायण ये बहुत हमारे प्यारा था। अच्युत चरितामृत उसमें लिखा है नाम रामचंद्र की महिमा पढ़ रहे हैं, रामायण में लिखा है राम नाम की महिमा। नेरो स्वभाव आमी जानी भालो मते, कोड़ी ना पाइले पार करे संध्या काले। हे प्रभु, आई हैव नो कर्म ज्ञान योग तपस्या, कुछ नहीं। And how to deliver to me? So I know in the end of the day, night time, you have to trust me. So I am. So he is saying everybody has gone. যারা আগে যারা পিছে এলো আগে গেল, আমি রইলাম বসে, হরি দিন তো গেল সন্ধে হলো, পার করাও আমারে, পারের কড়ি নাইকো ঠাকুর, पार कराओ आमारे। बहुत सुंदर कीर्तन है। इसको कीर्तन बाद में बताएंगे, बहुत लंबी कीर्तन और भी है, बहुत अच्छा लगे कीर्तन है ना। है गुरु ना भजिनु संधे सकाले, मन प्राण दिया रे, आमी गुरु ना भजिनु संधे सकाले, मन प्राण दिया रे। ये भी बहुत सुंदर कीर्तन है। I did not worship Lotus Feet of Guru morning and evening. So who will give me shelter? Sitting Guru na bhajinu sandhe sakale, mon prano diyare, furaiya gel mor sadhiro janamo, furaiya gel mor sadhiro janamo, ar na firaiya pavore. This body is what? Finish. Again will not get back this body. I did not worship lotus feet of Guru. So I sang this song. Guru na bhajinu sandhe sakale, mon prano diyare,
ফুরাইয়া গেল মোর সাধের জন্ম, ফুরাইয়া গেল মোর সাধের জন্ম, আর না ফিরিয়া পাবো রে। Again will not get back this body. This is finished. Chalo. Now coming timing over. So Gopakumar Katha. Gopakumar, that boy, he told, hey Mathur Brahman, listen my realization. How did I attain my highest perfection? Then Gopakumar, he told, hey Mathur Brahman, listen, I was born in Govardhan, on the lap of Giriraj Govardhan. मेरे जन्म कहाँ हुआ? गोवर्धन में, in the dynasty of cow-herded dynasty, that is called Gopajati. And so for this regard, every day I used to go to herding the cows. और रोज मैं नित्य प्रत्यह जो है गायों के लेकर के मैं चरवाहा ले जाता था. One day, and I became very thirsty. Then I came this place on the bank of Joguna, Kesighat. Then I saw one old man, and he was sitting in this place where I am sitting, Kesighat, in this kunja. And then I saw the old man. He also absorbed chanting these holy names. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hasi Yashoda Tanaya Prasida Sri Vallavi Jivan Radhikesha. When he heard these sweet names from his lotus lips, and I am sitting there. Then after a few minutes, that person, he opened his eyes and so much love and affection with his sidelong glance. Then he told, hey Gopakumar, you have many cows. Yes. Could you bring some milk for me? But why not? Because I completely was intoxicated with his love and affection. Love controls. And every day I used to come in front of him and listen sweet holy names and Harikatha, Sadhu Sangha. Actual Gopakumar told, he is my guru, his name is Jayanta. Just I briefly tell you. He told, my name is Jayanta. I was born in Bihar on the bank of the Ganges. Sanatana Goswami Pada explained Jayanta. Remember Gopakumar's guru's name? Jayanta. He was born in Bihar on the bank of Ganges. There. And when Gurudev told the Gurudev, heart complete was melted in tears. Because Gurudev was also, he was born in Bihar on the bank of Ganges. Very close. I saw when Gurudev gave the class, I was saying Gurudev heart melted and tears falling down. And this thing. So Gopakumar, he told, he is my guru. And one day, my Gurudev told, hey Gopakumar, I will give one valuable thing to you. That is called the mercy of Lord Jagadishwar Prasad. So next day, I came, taking bath in the river of Joguna, that my Gurudev told to take this Prasad, mercy of Lord. That is called Gopal Mantra. But when my Gurudev just chanted this Gopal Mantra, then all ecstatic mood manifested in his heart, and tears rolling down, and so much foam coming from his mouth, and he completely fainted. He did not tell to me how to chant this Gopal Mantra. Just he recited, and he went to trance. Then he absorbed in trance. He did not tell to what is the meaning of this Gopal Mantra. How will chant? So when I saw my Gurudev Jayanta in this classic mood, so much foam coming in his mouth and his eyes upside down, then I became very afraid. What happened? Then I went Joguna to fetching water. When I brought water, then Gurudev disappeared. He vanished from the place. But so much love and affection, so much attachment with my Guru. So I can't tolerate the separation from my Gurudev.
There Gurudev said, told Sanatana Goswami to explain in this way. What do bhajan and sadhana? Just this life, if you feel separation from your Guru, then your life will be successful. Yeah. Not do anything. Just to feel separation from Guru. And chant this mantra. Gopal mantra and Maha mantra. Good Premanande. What happened? Tomorrow will be explained. Do arati and do a pran pratishtha. You bring some honey. Here, bring honey. Then with the honey, I can pran pratishtha special mantra. Then do महाराज पानी उधर है आपके लिए आरती. पानी आपके ऊपर है? आपके लिए गर्म पानी उधर है आरती. जल प्रसाद. Very nice this katha. बहुत सुंदर. महाराज दूसरा आज महाराज बहुत है? पूरी मिर्ची बोले हाँ. एक कीर्तन भाग. आपका तो गल्ला बहुत ही स्वीट है। আমি গুরু না ভজিনু সন্ধে সকালে মন প্রাণ দিয়া রে উড়াইয়া গেল মোর সাধের জন্ম আর না ফিরিয়া পাব রে আমি গুরু না ভজিনু সন্ধে সকালে মন প্রাণ দিয়া রে আরে যাহার লাগিয়া খাটিয়া মইনু বাংলা বুঝেন যাহার লাগিয়া খাটিয়া মইনু से तो न फिरिया चाहिए रे। थोड़ा सा हिंदी बताइए। हम लोग इस संसार में जिसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, मृत्यु के समय कोई हमारे पास हट रहे घटना बने है, अकेला तुम्हें जाना हम पड़ेगा। मन लगा के अपना गुरु वंदना नहीं की। इसलिए कहते हैं मन से हम लोग गुरु वंदना नहीं इसलिए कहते हैं गुरु ना भजनु संध सकाले। जो गुरु हमें सब कुछ दिया, जो गुरु हमारे साथ भी जाएगा, एकमात्र हमारे साथ कौन जाएगा? वही गुरु जाएगा, जो परमात्मा चैत्य गुरु जो हमारे पास बैठा हुआ है। गुरु चार प्रकार होता है, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, महंत गुरु है। एक गुरु ही हमारे पास साथ ही जाएगा है, और कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। संसार में स्त्री पुत्र धन संपत्ति कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। मृत्यु के समय कंठ घोड़े आए थे हैं, कहते हैं पिताजी आप किस को कितना पैसा दिया मुझे तो बता दो, बैंक में कहाँ पर बैलेंस है, किसको कहाँ दिया, क्या पैसा दिया तो बताओ, नहीं तो सब तो बेकार हो जाएगा, चला जाएगा है। किंतु कोई साथ में नहीं जाएगा, धन भी नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं जहर लागिया खाटिया महीनू से तो न फिरिया चाहिए है। ये बहुत सुंदर ये कीर्तन करेंगे। अच्छा प्रसादम offering a plate? Yeah. Just you cover one cloth. मेरा कोई तो नहीं जाएगा ना मुझे। ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा एक सेकंड नहीं वो कागज पट गया तुम्हारी issue? Issue is here.